भी कोई गलती की हो तो ये चेयर रूल नियम 9 में बदल सकती है। नियम 9 में ये चेयर को पूरी पावर है कि उसको बदल दे। I will go through the record. I will go through the record. Thank you. Question number 91. Sharma Sahab, question hour. Question hour. Question hour. Question hour. Yes. Please sit down. This is question hour. Question hour, Sharma Sahab. Please sit down. Please sit down. Let the answer be given. Sir, the argument for privatization of airports was that airports will be user-friendly, customer-friendly and operation-friendly. Now the answer which has been received, this user development fee. Sir, the airports that is operated by the Airport Authority of India, the UDF is lesser there. And now the answer says that the UDF is levied only for arriving passengers in case of Delhi airports. Now sir, other private airports are there where this UDF on arriving passengers are not levied. So what is the special case? What is the special case with the operator GMR that is running Delhi airport? So this permission is given so that the UDF on arriving passengers can be levied, sir. Mr. Chairman, sir, as you know, the Airports Economic Regulatory Authority ERA is the one that regulates tariffs at all of these airports. And it is a practice around the world in several airports, for example, in Brussels, in Sydney, in Canberra, in Darwin, where in fact user development fees have been levied on arriving passengers as well. So it is in fact a global practice. And this is done to ensure that a certain return on invested capital is provided to the airport operator on the basis of their regulated asset base. Second question, 1 minute. Sir, this answer says that UDF is levied at airports as a revenue enhancing measure to bridge any revenue shortfall. So in case of GMR, there must be a revenue shortfall. I want to know specifically from the minister that the 5% land that was given for consumer purposes, where the Aerocity has been built, the hotels have been built, is that revenue calculated or that is left out and the GMR is telling that there is a revenue shortfall? Sir? Thank you. Yeah, the accounts of the airport operator are fully audited by the audit agencies as well as by ERA as well. And all revenue which are accrued to the airport operator, whether they are aeronautical charges or non-aeronautical charges, whether they are real estate charges, are all added together to assess what the revenues collected from the airport operator are. Once those revenues are collected, it is also appropriate that somebody who has made an investment and created an asset base gets an appropriate return on their invested capital, and that when there is a revenue shortfall in that regard, that's when user development fees are charged. Now, in all the other airports of India, the user development fee is only on embarking passengers. But as I've said, there is a global practice which says that both arriving and embarking passengers can be levied a user development fee, because after all passengers are using those airport facilities. Thank you. Shri, please sit down. Shri Yachuri, please sit down. Be peaceful. Sir, it's not a global practice to put user development fee on arriving passengers. It's a global exception. There may be some airports somewhere around who are doing it, but that is not a global practice. So don't take that recourse, sir. The point, sir, is that the airport operator operates the airport. The revenue collected there, and there's a shortfall, you are putting this user development fees. But the airport operator has also been given land by the government when the airport was built. And on that land, they've been permitted a 5% of the land usage for commercial purposes. That is not revenue for operating the airport, but that is the revenue for the company that's operating the airport. Now, if you take strictly on the basis of the accounts, the audited accounts, of the airport accounts, there may be a loss. I'm not disputing that, I don't know those figures. But rightfully, what should happen is that the airport operator who's been given that entire land, all avenues of income from non-airport activity, that is there from your Aerocity and other commercial activities, that should also be added. No, I think that is not being done, sir. This is a problem because I'm telling you, as the chairman of that Parliamentary Studying Committee for a long time, we've always been pointing out, and all these reports are there, which unfortunately have not been studied by successive governments. But
But the point is, are you adding that revenue? If you do that, then I don't think there is a loss in operating the airport. Thank you. Honourable member, of course, has been a member of these committees, and the Public Accounts Committee has studied very closely the existing agreements between the airport operator, in this case Delhi International Airport, and obviously the Government of India. All of these revenues coming from real estate, of course, are included in the rate base, are included in the revenue calculation. Honourable member is right that there is a lot more potential as far as real estate is concerned, and our efforts through the ARA and through our policies is to ensure that these real estate assets are fully utilized, and that those revenues are in fact added to the airport revenue, so that charges for all passengers are reduced accordingly. Shri Praful Patel. When the airports were privatized, and I happened to be the Minister of Civil Aviation at that time. Sir, as the reply has come, the UDF as a concept is universal, and there is no question of anybody having any opposition to that. But the issue here is, sir, I mean, I would like to inform at least the members for their knowledge, and Mr. Yechuri is aware of it as earlier the chairman of the committee, that in the case of Delhi and Mumbai airports, because the costs were going higher than what they were anticipated at the time of tender, an additional amount by way of Airport Development Fee, ADF, over and above the UDF was granted, so that, and it was allowed, and then it was even subsequently challenged, and it went all the way to the Supreme Court, which eventually upheld that the ADF over and above the UDF was to be permitted for X amount of years, which has now, I think, come to an end. So one thing more, sir, important because of the sentiment. Airport Economic Regulatory Authority was set up as an autonomous body independently to assess the tariffs and to decide whether UDF should be charged or at what rate it should be charged. Obviously, Airport Economic Regulatory Authority takes into account all the factors which have been mentioned here about whether the revenues come from non-aeronautical or real estate or whatever. The only point I would like to mention here, sir, is, and I would like to know from you, is that has the UDF only on arriving passengers been approved by the Airport Economic Regulatory Authority? If it has, I would also like to point out and ask you that in your recent National Civil Aviation Policy, which has been unveiled just now, you have bypassed the Airport Economic Regulatory Authority and asked them how they should be, I mean not asked them, directed them rather, how they should be charging the tariff on the airports. So there is a, I would say, a mismatch when you set up a regulatory authority. It is with the intention to have an arm's length so that the government has no role in that and it is decided independently. But under the new policy, you have directed the Airport Economic Regulatory Authority as to how they should be charging the tariff. So is that correct? And if it is true, then what does the AERA do in future? Thank you. The Honourable Member has brought up 2 points. The first point that he brought up was regarding the development fee versus the user development fee, and the second one is the independence of AERA as well. I'll answer both points that he's raised. With respect to the development fee and the user development fee, the two are different. The development fee is used prior to the operation of a particular terminal, for example. It's on passengers that are not necessarily using those facilities, and it reduces the cost of capital in the future, so in some ways it can be much more economic, and it has been used in Mumbai and Delhi airports in that regard. The user development fee is then used if there is a shortfall in revenues, so that in fact the cost of capital, the weighted average cost of capital, can be recovered for the regulatory asset base, and that is why it's being done in Delhi. So that's the answer to your first point. On your second point with respect to the independence of the AERA, that is of course enshrined in law. It's a statutory body as part of the AERA Act of 2008, and we will naturally adhere to all the laws. 1 minute. Thank you, Shri Rajesh Shukla. पैसेंजर यूजर फ्रेंडली फी जो अराइवल पे भी ले रहे हैं, डिपार्चर पे भी ली जाती है, एक चीज़ है। दूसरी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी बहुत दिन से कह रही है कि पैसेंजर्स को हर तरह से हासिल किया जाता है। आप देखिए कि जिस तरह से पहले एयरलाइंस की बात है कि एयरलाइंस किस तरह से किराए बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में कोई मैकेनिज्म निकाला जाए, कोई अपर कैप निकाली जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। और इसको अथॉरिटी के नाम पे, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये जो है अराइवल चार्जेस लिए जा रहे हैं।
हम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं कि वो जो है पैसेंजर्स को राहत देने के लिए क्या अपर कैप जो है लगा रहे हैं एयरलाइंस पे, जिससे कि उनको ज़्यादा किराया न देना पड़े, क्योंकि ये किराए में शामिल होता है। जो आप अराइवल पे लगा रहे हैं ये किराए में शामिल होता है, तो इसको कम करने के लिए कोई अपर कैप लगाएं कि अनाप शनाप किराए न बढ़ाए जा सके। Thank you. चेयरमैन साहब, मैं माननीय सदस्य को बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यहाँ दो तरीके की प्राइसिंग हो रही है। एक जो प्राइसिंग हो रही है वो हवाई अड्डे की प्राइसिंग हो रही है, उसको एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो 24 मेजर एयरपोर्ट्स हैं उस पे उनका रेगुलेशन है और वो टैरिफ्स वो सेट करती हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है और उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं बनता है। उनको जो आंकड़े हैं, जो लॉजिक है, उसके आधार पे वो टैरिफ सेटिंग होती है। दूसरा जो है, दूसरे जो हम लोग प्राइसेस की बात कर रहे हैं वो एयरलाइंस की प्राइसेस की बात कर रहे हैं, और वहाँ जो आज के समय जो कानून की जो रूपरेखा है वो मार्केट फोर्सेस तय करते हैं कि वो प्राइसेस कितनी होनी चाहिए। A passenger is suffering from That's both a different aspects. matter. Okay, What question. are you doing? No. Praful ji. Praful ji, please. It's not being there. Please, question 92. Sir. Question 92, yes. No, please. Answer with regard to part A has been tabled. With regard to B and C, since information is to be collected from several states and it relates to the Defence Ministry, I have said that as soon as it comes, it will be placed before the House. Supplementary, please. Sir, I would like to request you to grant me some more time because I want to bring a very, very important matter to the before all. Sir, on 2nd December 2014, in a reply to Sri Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Member of Parliament, Defence Minister had defined OROP. I would like to quote if you allow. Sir, the definition was such: one rank, one pension implies that uniform pension to be paid to the armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service irrespective of their date of retirement, and any future enhancement in the rates of pension to be automatically passed on to the past pensioners. This implies bridging the gap between the rate of pension of the current pensioners and the past pensioners, and also future enhancement in the rate of pensions to be automatically passed on to the past pensioners. Unquote, sir. Sir, but the same government on November 7, 2015 defined OROP in a different way. So I would quote that also. Quote, sir, OROP implies that uniform pension to be paid to the Defence Forces personnel retiring in the same rank with the same length of service regardless of their date of retirement, which implies bridging the gap between the rates of pension of current and past pensioners at periodic intervals. Sir, the government had notified. What's the question? Sir, I'll come to that, sir. That's what my question is. The pension would be refixed every 5 years. Sir, Honorable Finance Minister might say me that Honorable Defence Minister had replied, so how is he related? But his ministry is going to do the implication of the finance. Sir, I just want to know how and who made this difference. Can it be clarified how has the definition of ORP, once given in the Parliament, be altered, and this alteration has been approved by which authority? Because, sir, the Ex-Servicemen Association, they are demanding that every year there has to be, the pension has to be refixed. But the government has said in periodic intervals, that means in 5 years. So will the government say that in these 5 years, there won't be any change? Fine. Thank you. So the principal question really doesn't relate to the definition of the word OROP. The principal question is... No, 1 minute. No, that's besides the point. No, let him answer, please. No, please. You see, the principal question really is what is the quantum of amount which is there in the 7th Pay Commission, which has been prescribed for in the budget, and what is the amount which has been kept as far as the OROP is concerned. Now, OROP has been a very long-standing demand as far as the defence forces are concerned. OROP did not have a standardized definition as such. There were different interpretations being given.
after a detailed consultation between the government and the organization of the retired defense personnel, the Defense Ministry itself came with a particular proposal, and that proposal is the one which has been announced in the year 2015, which the government has committed itself to implement. Under that proposal, the revision takes place after a period of every 5 years, because otherwise the impact of the definition, as you are mentioning, which was the earlier interpretation which is being given, is that at small periodic intervals, when every employee retires, then you would have a situation where a large number of revisions itself would take place, which was even financially not viable as far as the government is concerned. After all, the government has a responsibility to spend on various areas, and defense forces certainly is one of our prime areas. And after consultation, this particular definition, which has been given by the ministry, has been implemented, accepted and implemented by the ministry, where a revision would take place every 5 years. Thank you. Second question. Doesn't the minister agree that it will have some difference, because every year there is a change? So in 5 years, sir, it goes to both of you, sir. How can you say that it will be done in 5 years? In the case of civilian employees, it takes place when the pay commission meets every 10 years. Therefore, in the case of armed forces, it is 5 years, and that is the decision which the government has taken, keeping all resources, so that the benefit also accrues as far as the defense forces are concerned, the retired personnel is concerned. This itself gives to all retired persons a significant amount of an advantage after the implementation of the OR. Okay, thank you. Sir. Sir, my second supplement, sir. Have the issues of premature retirement cases been referred to the Single Justice Committee to look into the anomalies of OROP? If not, then why? And if yes, then by when? Because, sir, lakhs of ex-servicemen people must be watching this, and they are waiting for his answer. We all are answerable to them, sir. There were 7 points in the decision that the government, the Ministry of Defense, announced when it announced the implementation of the OROP. There were certain issues which related either to anomalies or about certain other issues which were pending. They have all been referred to a committee headed by a retired Chief Justice. That committee is currently hearing all parties. It has asked for a slight extension. And I do hope that the committee headed by a retired judge, which is the judicial tribunal, which is trying to resolve all unsettled views and all ambiguities and anomalies, will come out with its recommendations very soon. Thank you. Question number 93. Yes, let the answer be given. Supplementary, please. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न जो मैंने पूछा था वो इस देश के अंदर ऐसे युवा बेरोजगार जो बिल्कुल मध्यम श्रेणी के और दलित है, गरीब है, उनको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की और मुद्रा बैंक के तहत कितने लोन मिले। मैं आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उत्तर में एक बात लिखी है, अभी तक एक वर्ष में 3 करोड़ 48 लाख ऐसे युवाओं को 1,47,449 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मान्यवर, एक भ्रम था कि कह रहा हूं सर, एक भ्रम था, फैलाया जा रहा था झूठा प्रचार के प्रधानमंत्री जी योजनाएं घोषित करते हैं, क्रियान्वयन नहीं होती। तो ये जो इसका उत्तर तो बहुत श्रेष्ठ आया है। साथ में मेरा प्रश्न है, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वित्त मंत्री जी का कि आपके उत्तर में अनुबंध सेकंड के अंदर और जो 2015-16 में जो लक्ष्य निर्धारित किया था और लक्ष्य जो स्वीकृत हुआ, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। श्रीमान, आपके 14 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य को पार करके, कहीं कहीं तो बैंक ऐसे जिन्होंने 2 गुना 3 गुना तक जो है लक्ष्य हासिल किया है, प्लस 9 बैंक अभी आ रहे हैं सर, 9 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य से बहुत कम हासिल किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ऐसे बैंकों के बारे में जो अधिक लक्ष्य हासिल करते हैं उनको कोई पारितोषिक देना या उनको बढ़ावा देने की कोई योजना तय की है, या जो बिल्कुल न्यूनतम पर है उनके लिए कोई तरह की समीक्षा कुछ की है, इसके बारे में बताएं। थैंक यू। हमारा 15-16 का लक्ष्य 1,22,000 करोड़ रुपए का था, और हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है
कि हमने इसको पार किया और 1,32,000 करोड़ का आवंटन किया जो लोग ले चुके हैं, और इससे प्रभावित होकर अगले वर्ष का लक्ष्य हमने बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रखा है। और जैसा बताया गया है कि सामान्यतः हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां पर अगर कोई बैंक देने में असुविधा कर रही है तो उसकी समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि समस्या समझ में आती है कि जब पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बिना किसी जमानत के जब ऋण मिल रहा है तो अपने आप में ये आश्चर्यकारी कदम है। और जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं और ख़ास तौर से नौजवान और महिलाएं, मुझको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, इसमें करीब 79% महिलाएं इस लोन को ले रही हैं। तो मैं इतना कह सकता हूं कि सभी सदस्यों से आग्रह है, यदि कहीं पर कोई समस्या या असुविधा हो तो उसको बताने का हमको प्रयास करें, हम उसमें सुधार करेंगे और आने वाले वर्षों में और अच्छे ढंग से इसको लागू करने का काम करेंगे। और अगले वर्ष का हमने इसी बात को ध्यान में रखकर 1,80,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। दूसरा प्रश्न। श्रीमान, दूसरा प्रश्न है मेरा राजस्थान से संबंधित। अनुक्रमांक 1 में और सभी जिलों के बारे में लक्ष्य दिखाया गया है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा मंत्री जी का, धौलपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही 4 जिले ऐसे हैं जहां पर संख्यात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो बहुत कम लोगों को लोन दिया गया है। तो मैं साथ में एक भी निवेदन और करूंगा इसी में कि ये जो अभी 16-17 में और जो निर्धारित किया गया है लक्ष्य, आपने अनुक्रमांक सेकंड में भी कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसमें भी अभी देखेंगे तो केवल मात्र 1-2% 9 बैंक ऐसी हैं जिन्होंने 1 या 2% लक्ष्य हासिल किया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी 3.5 महीने निकल गए, क्या सरकार ने ऐसी कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है क्या, जिससे जहां कम है उसको ठीक करें, प्लस आने वाले टाइम में उसकी गति तेज हो और गत वर्ष की तरह ही युवाओं को लोन मिल सके। थैंक यू। हम जानकारी लेंगे और जहां पर कम अगर आ रहा है तो हम उसको निश्चित रूप से सुधार करने की कोशिश करेंगे और संबंधित बैंक के अधिकारियों को बुलाकर हम इस पर चर्चा करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। थैंक यू। श्री रापरो। In our country, the banking sector is in distress. With the latest confused intention of the union government to merge certain flourishing banks into the State Bank of India, it has compounded. And the ambitious program of Mudra neither created any hope nor laid a path. It is the truth which is coming out from the studies of several parliamentary standing committees, including industry and subordinate legislation and other committees. In this backdrop, I have studied through my knowledge that the regional rural banks which have been assigned with the Mudra loan disbursement could achieve less than 5%. This is on record and before the Ministry of Finance, number one. Number two. What is your question? Yes, sir. Yes, sir. This is a very larger complication. That is why I am putting one additional point. And the rebranding of microfinance loans have been shown as the Mudra loans. This is the tragedy. You are not going to gain any good name. Instead, you are complicating the entrepreneur's enthusiasm. Whether the Union Finance Ministry taking these complications into the cognizance to study and streamline the Mudra loans, otherwise these will turn into the microfinance scandals. Thank you, sir. Thank you. ऐसा नहीं है। सरकारी बैंकों के अलावा करीब 146 संस्थाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम ये ऋण दे रहे हैं और जहां कहीं भी शिकायत आती है उसकी हम समीक्षा करते हैं। ये बात सही है कि किसी संस्थान ने या आरआरबी का काम कुछ और भी है तो वो उसके अलावा भी वो फाइनेंस करते हैं, पर कहीं पर भी अगर शिकायत मिलती है तो हम उसको समीक्षा करते हैं, उसको देखते हैं। मैं माननीय सदस्य जो बता रहे हैं हम उसकी शिकायत का ध्यान करेंगे, यदि कोई समस्या होगी उसको दूर करने का काम करेंगे। थैंक यू। That's all. Thank you. Question 94. माननीय सभापति जी, मैं युवा कार्यक्रम के यूथफुल युवान मंत्री का स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी उनने रियो ओलंपिक के लिए जागृति पैदा करने के लिए और एक दौड़ का आयोजन किया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौड़ में और इस दौड़ से हम ओलंपिक में भी कुछ पदक प्राप्त करने का साहस और उत्साह प्राप्त कर सकेंगे। मेरा सीधा प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर जो खेल संरचनाएं हैं वो बहुत फैली हुई है और उनकी स्थिति भी बहुत जगह पर अच्छी नहीं है। जहाँ जहाँ कुछ अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं वहाँ पर हमको परिणाम मिलते हैं, किंतु इतना बड़ा देश होने के नाते से हमें प्रतिस्पर्धाओं में पदक की अभिलाषा रहती है और इन पदकों को प्राप्त करने के लिए विश्व स्तरीय हमारी और खेल के मैदान चाहिए, उनकी कोचिंग चाहिए, उनका खुराक चाहिए, उनका आवास चाहिए और सब प्रकार से सुविधायुक्त जब हम कर सकते होंगे तो पिछले ओलंपिक में जितने हमने पदक प्राप्त किए हैं हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हमको डबल मिलेंगे, परंतु वो संख्या भी सवाल क्या है? मेरा सीधा प्रश्न ये है माननीय सभापति जी कि हम किसी भी खेल में जहां हमारी प्रतिभाएं हैं और जहां हम ओलंपिक के रिकॉर्ड के बराबर जाने वाले हैं उन खेलों में विशेष रूप से ध्यान दे करके हम उस स्तर को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करेंगे जिससे कि ओलंपिक खेलों में हम पदक प्राप्त कर सकें। थैंक यू। खेलों को बहुत ही महत्व देना चाहती है। इसके साथ साथ आधुनिक सुविधाएं, मॉडर्न फैसिलिटीज सब जगह मिले, जैसा कि सत्यनारायण जतिया जी ने जो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, जो विजिट भी करके आई, ऐसे मिले, उसके लिए हमने काफ़ी सारी योजनाएं बनाई हैं। और इस समय जो इस ओलंपिक के अंदर भी टारगेट ओलंपिक पोडियम करके जो योजना बनी, उसके अंदर हमने जो था कस्टमाइज्ड उनको ट्रेनिंग दी, बेटर से बेटर इक्विपमेंट दिए, बेटर से बेटर कोच दिए, फॉरेन कोच भी दिए। और मैं समझता हूं कि अभी 2020 का जो ओलंपिक है उसकी कोचिंग अभी से हमने 4 सेंटर्स के अंदर शुरू कर दी है। और जो माननीय सदस्य कह रहे थे, अभी हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को रेफर किया है मामला, जो कि जितने भी हमारे साई के सेंटर्स हैं जो लगभग 29 हैं, उनके अंदर ये देखकर हमको रिपोर्ट देगा कि कहां कहां हमारे सेंटर्स के अंदर क्या कमी है और क्या उनके अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज होनी चाहिए। साई का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वित्त मंत्री जी बैठे हैं और हमारे देश की 65% से ज्यादा जनता युवा है और हमारा एक लक्ष्य तो है कि हम ज्यादा से ज्यादा पदक जीतें, पर दूसरा लक्ष्य है कि पूरे देश के अंदर गांव-गांव, गली-गली तक खेलों का हम विस्तार करें, ये भी हम चाहते हैं। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति जी, जैसा कि कहा है कि साई के अंतर्गत वो खेलों के विकास के बारे में काम करना चाहते हैं। साई ने भी प्रस्ताव दिए हैं 13 राष्ट्रीय खेल अकादमियों के लिए और 13 खेल राष्ट्रीय अकादमियों को स्थापित करने में से अभी तक हम 5 अकादमी स्थापित कर पाए हैं। मेरा ये कहना है कि इस सारी बातों को वित्तीय सहायता की जरूरत है और साई के लिए जो वित्तीय सहायता जुटाने का काम है वो पीएसयू से, बैंकों से और इंडस्ट्री से जुटाने के लिए जो एनएसडीएम का फंड बनाया गया है उसको भी फिर से और प्रेरित करने की दृष्टि से जैसा सीएसआर का फंड बना है उसके लिए क्या उपाय करेंगे और इन 13 खेल अकादमियों में से जो 5 शुरू की गई और बाकी की अकादमियों के लिए कहां से वो उपाय करेंगे और किस तरह से इनको प्रारंभ करने के लिए योजना बनाएंगे। सदस्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इस खेल केवल सरकार के सहारे नहीं चलेंगे, इसके अंदर जहां एक और फेडरेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चलता है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर का भी चलना चाहिए। इसलिए हमने ये नेशनल स्पोर्ट्स फंड बनाया है और उस नेशनल स्पोर्ट्स फंड के रिएक्शन भी आए हैं और अच्छी बात यह है, रिस्पांस भी आया है। अच्छी बात यह है कि हमारे देश के अंदर पीटी उषा, मैरी कॉम, गोपी चंद, अश्विनी नपच्चा जैसे लोगों ने एकेडमी खोली है और हम भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फंड में कंट्रीब्यूट करता है उसको उतनी ही मैचिंग ग्रांट हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल जाती है। तो मैंने अभी इन्हीं दिनों के अंदर एसोचैम के पदाधिकारियों से और फिक्की के ऑफिस बेरर से बात की थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ला पाएं और हम देश में एक ऐसा साई का मॉडल सेंटर खोलना चाहते हैं जिसको फिर बाकी स्टेट्स फॉलो करेंगे। सर, जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है टू प्रमोट स्पोर्ट्स और सेंटर का काम है टू अचीव एक्सीलेंस। थैंक यू। श्री दिलीप तिर्की। थैंक यू सर। सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और मेरे ख्याल से खुद बास्केटबॉल नेशनल पर रह चुके हैं। सर, मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में 65% यूथ हैं, लेकिन जो हमारे पास आंकड़ा है अभी जितने भी हॉस्टल एकेडमिक्स में जितने भी बच्चे अभी हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं
11,773, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फ्यूचर ओलंपिक देखते हुए या एशियन गेम को देखते हुए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा सर कि मैं हमारे उड़ीसा में एक 50 सीट के लिए ट्रायल हुआ था। वहाँ पे 4,500 ट्राइबल बच्चे सिलेक्शन के लिए गए थे, सिर्फ 50 सीट के लिए। तो इसलिए मैंने कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स हॉस्टल को जितना और मैक्सिमम बढ़ाया जाए और हमारा यूथ स्पोर्ट्स हॉस्टल में आएंगे तो और क्वालिटी प्लेयर हमें मिल पाएगा। इसलिए आपके पास मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि क्या हम ट्राइबल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे हॉस्टल्स एकेडमीज हैं, इवन डिपार्टमेंट्स टीम जितने भी हैं, वहाँ पे कोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेनर्स हैं। ट्रेनर जो फिटनेस कोच हैं बहुत हॉस्टल एकेडमी में बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि नेशनल फिटनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाने की कोशिश करेंगे क्या? सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंगल डिसिप्लिन एकेडमीज बनाने की जाती है। एक जगह हॉकी की कोचिंग हो रही है, एक जगह बॉक्सिंग की कोचिंग हो रही है, एक जगह स्विमिंग की कोचिंग हो रही है और आर्चरी की हो रही है। इस तरीके से हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जो माननीय सदस्य ने कहा है वो बहुत ही अच्छा उनका सुझाव है। हमारे पास अभी स्पेशल एरिया जो गेम्स हैं उसके अभी 19 सेंटर्स हैं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि वो अभी काफी होंगे जी। तो इसलिए ट्राइबल्स, आदिवासी, और सबसे बड़ी बात सदन को ये जानकर होगा कि अभी भी जो ओलंपिक के कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में जो हमारे ग्रुप्स जो जाते हैं, हमारे कंटिजेंट जाते हैं, उसमें 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो इसी ट्राइबल एरिया, गांव की पृष्ठभूमि, गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। तो सवाल जहां तक ओलंपिक का सवाल है तो अब मैं कह सकता हूं 11,000 ट्रेन कर दिए तो शायद लोग कहेंगे कि इनमें से प्लेयर निकल आ जाएंगे। पर अगर मैं ये कहूंगा कि देश के अंदर खेल को फैलाना है तो फिर सेंटर्स और खोलने हैं, और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उस पर जरूर हम गौर करेंगे। थैंक यू। श्री प्रेमचंद गुप्ता। श्रीमान जी, हमारे देश में स्पोर्ट्स को लास्ट प्रायोरिटी समझा जाता है। पुराने वित्त मंत्री महोदय भी यहाँ बैठे हैं और नए वित्त मंत्री महोदय भी यहाँ बैठे हैं। 125 करोड़ के पॉपुलेशन के देश में और जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उनमें एक गोल्ड मेडल, 1-2 सिल्वर मेडल हम लोग जीत के आते हैं और तालियां बजाते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं पहले मेरा क्वेश्चन करूं उससे पहले गोयल साहब का ये मेडन आंसर है, इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूं। श्रीमान जी, 900 करोड़ रुपए की डिमांड की गई आपके मंत्रालय द्वारा शायद, और आपको कुल मिला के और 416 करोड़ रुपए आपको एलोकेशन हुआ। श्रीमान जी, 4 करोड़ रुपया 1 करोड़ पॉपुलेशन को मिला। आप स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? क्या डेवलपमेंट करेंगे? आप एक स्पोर्ट्स सेंटर बना सकते हैं 4 करोड़ रुपए में? दिल्ली जैसे शहर को अगर 4-4.25 करोड़ रुपए की एवरेज अगर एलोकेशन होती है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के नाम पर, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो सवाल क्या है आपका? श्रीमान जी, दूसरे देशों में जैसे चाइना है, रशिया है और दूसरे CIS कंट्रीज हैं या वेस्टर्न कंट्रीज है, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, उनके पेरेंट्स को उनके साथ रखा जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए जिसके तहत स्पोर्ट्स को वास्तव में डेवलप किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट में कितनी प्रतिभा है, साउथ में कितनी प्रतिभा है, बिहार झारखंड में कितनी प्रतिभा है। झारखंड की एक बेटी तीरंदाजी में गोल्ड मेडल लाने का टारगेट बना रखा है। लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड। और पिता उसके 3 व्हीलर चलाते हैं। थैंक यू। उसके पास में वो खरीद। अब आप जवाब सुन लीजिए। आपने जो सजेशन दिया है उसका जवाब ले। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अगर श्रीमान जी आपने अभी ये चार्ज लिया है, एक तो जो ये रोज कंट्रोवर्सी आ रही है, कभी नरसिंह यादव की, कभी इंद्रजीत भाई आप सिंह सवाल की, पूछ लीजिए ना गुप्ता जी। आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं? दूसरा, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए क्या आपने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है, क्या सोची है? थैंक यू। और क्या वित्त मंत्री महोदय प्लीज रिप्लाई टू द क्वेश्चन कि और फंड्स एलोकेट No, किए जा सकते हैं? please, no more speech making, please.
सर स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर कोई नहीं, सेंटर से तो हम मांग ही रहे हैं 400 करोड़, 160 करोड़ तो हमको चाहिए साई के सेंटर्स को अगर हम अपग्रेड करना चाहें उसी के लिए चाहिए, पर स्टेट्स को भी अपने बजट बढ़ाने होंगे सर। तो इसके अंदर आप देखिए गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर स्पोर्ट्स का बजट अकेले 500 करोड़ रुपए है। एक मिनट सुनो प्रेमचंद जी, सुनो सही। Premchand ji, please sit down. Premchand ji, please sit down. No, no, no argument. Premchand ji, please. Could you please resume your place? Let him finish. और सर हम चाहते हैं कि केवल क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, कबड्डी ये सब भी बढ़े। और हमारे देश में खुशी की बात है कि अभी बिट्स फुटबॉल हो रहा है और अगले साल अंडर 17 फीफा फुटबॉल हो रहा है। तब हम चाहते हैं कि सारे देश के अंदर फुटबॉल और दूसरे खेलों का प्रो कबड्डी अभी चल रही है, तो जाहिर तौर पर स्टेट्स को भी बजट बढ़ाने हैं और हमें भी बजट बढ़ाने हैं। जहां तक नर्सिंग का मामला है वो उसके ऊपर हमने कल स्पष्टीकरण दे दिया था, उससे ज्यादा हमको कहने को कुछ नहीं है। अभी वो प्रोविजनली सस्पेंड है, कोई नई अगर कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई तो वो नहीं जा पाएंगे जी। थैंक यू। श्री कलिता, नहीं, प्रेमचंद जी, you are finished. Please don't interfere. Kalita ji, this is not fair. Thank you, Chairman, sir. My supplementary arises out of the reply given by the Honorable Minister regarding sports development schemes. Sir, some time back there was a scheme involving the members of Parliament to have projects of sports development in their areas, where MPs used to offer an amount, a fund, which was matching amount was supposed to be given by the government, sports department of the government. Whether the same scheme is being implemented or the minister is thinking of another scheme involving the MPs in the development of sports. Thank you. Thank you, sir. Thank you. सर एमपीज फंड कितना लेकर आएंगे? एमपीज सिर्फ डिमांड रखेंगे उससे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास तो एक लिमिटेड फंड है और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। और अब देश के अंदर सर सुनिए देश के अंदर ग्राउंड्स भी कम होते चले जा रहे हैं। प्लीज इन द मिनिस्ट्री प्लीज गो थ्रू इट। अभी इस स्कीम के ऊपर ऐसा एमपीज वाले के ऊपर कोई ऐसा वर्क नहीं हो रहा है। जब आप कोई बात बताएंगे तो मैं उस स्कीम को देखकर फिर दोबारा से उसको चालू करूंगा। नो थैंक यू। सर जी आप कुछ कहना चाहते थे? Honorable Minister has said there are insufficient funds, especially for development of infrastructure and other things. About 5 years back, Indian Cricket Board has decided to give 50 crores to Sports Ministry just to encourage budding players. Money was paid and Cricket Board has received communication from Finance Ministry. Your exemption has been removed because you have spent money for elsewhere other than your sports. I recollect, then leader of the opposition of this house and myself met then Finance Minister to resolve that issue, but that issue is still pending. Is it possible to find some solution for this? Arunji. Sir, Finance Minister is here. I'll certainly have the matter looked into. Thank you. Question number 95. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. 95, sir. So the reply has been tabled. So my first supplementary, in fact, not only is the Finance Minister here today, but I note that there are two former Finance Ministers who are in the House, Dr. Manmohan Singh ji and Mr. Chidambaram. So the answer, sir, is a noble intention: elimination of revenue deficit and build-up of revenue surplus. Sir, I would like to bring to the notice of the finance, which is a good noble intention. The RBI data, sir, of 2016 is my first supplementary, sir. And that data shows there are 10 states.
each have these huge financial burdens, sir. Maharashtra with 4 lakh crores, I'm not giving you the figures, sir, but they're all in excess of 2 lakh crores. Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Bengal, Karnataka, Madhya Pradesh and Kerala, sir. Sir, there's a long list, sir, of 10, 12 states. The figures are obviously available sir, for this. And the states, sir, are being burdened with paying back this money, especially the debt-stressed states like where I come from, Bengal and Punjab, Kerala. My specific question, sir, to the Finance Minister through you, is to give the state some level of confidence. Would the government consider setting up a committee of state finance ministers headed by the finance minister so this specific problem could be addressed so he can meet his noble goal? Thank you. So this issue has been raised by some state governments, particularly the state also my learned friend comes from. From time to time, the Honorable Chief Minister of West Bengal recently raised it at the Interstate Council meeting also. At the end of the day, sir, we have a structure which is defined under which the center and the state have to meet their own expenditure requirements, which includes both their revenue requirements, also the capital needs. There is also a system by which the states, in addition to their income, also get a devolution as far as the central share of taxes are concerned. Eventually, we have all to live within the limitations of those limited resources available. The whole essence of fiscal deficit that states would have or the center would have is that we are borrowing in order to finance either revenue or capital needs of the current generation. And therefore, we have to borrow as much as we can afford to service. That's a planning that every state will have to do, that every center will have to do. Now, appointment of committee is possible, but at the end of the day, it is prudent fiscal planning which every state will have to do, which is to raise its own level of resources by greater generation of economic activity and moderating its expenditure accordingly. Second question. Sir, my second supplementary actually relates to a phrase which the finance minister just used about this devolution which he keeps talking about from 32 to 42%, sir. Sir, I have two specific facts on which my second question is based. Sir, the center has withdrawn financial support from 39 major schemes which the states were getting. And my second fact, sir, in as many as 58 important schemes, the center-state structure of percentage has been dramatically changed. Dramatically changed, sir. So sometimes it was 50-50, that same 50-50 today, the state is paying 70 or 75 and the center is reduced its contribution. Sir, sometimes it becomes 90-10. So my specific question, sir, is that, like for example, in the BRGF, where my state was to receive 6,400 crores, we actually received 2,000 crores. That's one example. Or the other commitment made is for CST. When CST was brought down, sir, from 4% to 2%, there again, sir, the states were supposed to be compensated. I've given the finance minister through you, sir, two examples, the BRGF and the CST. So the promises were made, even if before we set up this committee, would he consider addressing these two specific cases for all states, including mine, to release these funds at the earliest? Thank you, sir. So as far as